The India Meteorological Department has confirmed that cyclone Montha will make landfall near Kakinada in Andhra Pradesh tonight before turning inland towards southern Odisha. IMD Director General Dr. Mrityunjay Mahapatra said the system, currently a severe cyclonic storm over the Bay of Bengal, is moving north-northwestwards with sustained winds of 90 to 100 km per hour and gusts up to 110. After landfall, the cyclone will travel across the southern belt of Odisha, impacting districts like Koraput, Malkangiri, Nabarangpur and Rayagada. Dr. Mahapatra said the maximum wind speed in Odisha will likely range between 60 and 70 km per hour, gusting up to 80. Coastal conditions will remain rough, with strong winds and rain intensifying from the evening of October 28 and continuing through October 29. According to IMD, Gajapati, Ganjam, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nabarangpur, Kalahandi and Nuapada will experience the cyclone's direct impact. Continuous rainfall, flash floods and localized power disruptions are possible as Montha moves inland before weakening into a depression over Chhattisgarh. जहाँ में गतकाली पूर्वानुमान करिथिलु ताहा में आज बजाय रखिछु पूर्वानुमान रे कोनसे परिवर्तन होई नाही माने उपकूल को छुइबा परे धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे जारी रहिबो यात्रा एवं ओडिशा आड़ को मुहाइबो मालकानगिरी कोरापुट नबरंगपुर रायगड़ा जिला मध्य दे अतिक्रम करी छत्तीसगढ़ आड़ को जीवो यदि आप ओडिशा कथा देखंती ते सबुठु सर्वाधिक विंड स्पीड बा पवन वेग 60 रु 70 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिनेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे विशेषतः दक्षिण ओडिशा उपकूल अंचल रे समुद्र रे एवं जो सब जिला मानक रे एही पवन प्रभावित हेबो ताहा होची गंजाम गजपति स्पेशली कोरापुट नबरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा कलाहांडी नुआपड़ा इत्यादि एवं यही पवन जो सर्वाधिक पवन ताहा आरंभ हेबो 28 तारिख संध्या रे एवं ता चालू रही पारे 29 तारिख सकाळ।